Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from SURAJ Senior Secondary School, Mandagat. Dear students, in my last video I discussed with you topic accounting ratio, basic of accounting ratio and type of accounting ratio. I told you about type of accounting ratio. Accounting ratio are four types. First is liquidity ratio, second is solvency ratio, third is hour year activity ratio, and fourth is profitability ratio. Today I will discuss with you liquidity ratio. First of what do you mean by liquidity? Liquidity is the ability of the firm to meet its current liabilities when it falls due. कि जब आपके करंट लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए आएगा तो फर्म की एबिलिटी अपने लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए कि क्या वो स्थिति में है या नहीं अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, तो इसके लिए हम निकालते हैं करंट रेशियो. इसके अंदर हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट इज द करंट रेशियो, सेकंड इज द क्विक रेशियो. Quick ratio. We can also use word क्या liquidity ratio, liquidity ratio और liquid ratio और acid test ratio. Acid test ratio. First of all, I discuss with you liquid ratio. Current ratio. Current ratio. Current ratio. Formula of current ratio is different. Current assets upon current liabilities. Current assets formula current ratio formula current assets upon current liability. What things include in the current assets? Dear students, in current assets 6 things include. Current assets, current investment, plus inventory plus trade receivable plus cash and cash equivalent plus short term loans and advances, loan and advances, and other current assets. First current investment, second inventory, third trade receivable, fourth cash and cash equivalent, fifth short term loans and advances, sixth other current assets. करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? करंट लायबिलिटीज डियर स्टूडेंट, इसमें चार चीजें आती है. पहली शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सेकंड ट्रेड पेबल, other current liability, third other current liability, fourth short term borrowing. Dear students, करंट एसेट्स में 6 चीजें इंक्लूड होते हैं. करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में 4 चीजें इंक्लूड होती है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन.
अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें, देन इफ करंट रेशियो इज 2:1 or more than it, then it is good. यदि आपका जो करंट रेशियो है वो 2:1 या उससे ज्यादा होगा तो आप उसको गुड कहेंगे। ये इसके लिए बेंचमार्क डिसाइड किया गया है। अगर इससे कम है तो आप उसको नॉट गुड कहेंगे। अब बात करता हूं मैं क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो फार्मूला है क्विक रेशियो का। डियर स्टूडेंट्स, क्विक रेशियो का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स यानी लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? जिनको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जल्दी से मीन्स विद इन 3 मंथ जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्विक एसेट्स का फार्मूला, क्विक एसेट्स फार्मूला करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। करंट लायबिलिटीज में वही 4 चीजें जो आपको मैंने बताई थी। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल प्लस ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यदि मैं इसके बेंचमार्क की बात करूं, देन इफ क्विक रेशियो इज 1:1 or more than it, then it is good। यदि करंट रेशियो 1:1 या उससे ज्यादा हो तो आप उसको गुड कहेंगे। क्विक रेशियो 1:1 या उससे ज्यादा तो आप गुड कहेंगे। क्विक रेशियो फार्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। करंट लायबिलिटी में वही 6 चीजें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यदि इसके बेंचमार्क की मैं बात करूं तो यदि क्विक रेशियो आपका 1:1 या उससे ज्यादा हो तो गुड कहा जाएगा, अदरवाइज आप इसको नॉट गुड कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ यू अंडरस्टैंड इट, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.